हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट दिस सॉलिड ज्योमेट्री बाय यूजिंग Autodesk Inventor। आपको पहले इन्वेंटर ओपन करके लेना है। यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर ऑल द डायमेंशंस आर इन डायमेंशन चेंज करने के लिए टूल्स पे जाएंगे। टूल्स में डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर यूनिट्स, यहाँ पर मिलीमीटर करके ले अप्लाई क्लोज। क्लिक ऑन द 3D मॉडल, स्टार्ट 2D स्केच, सिलेक्ट वर्क प्लेन। यहाँ पर हम XY प्लेन सिलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले ये वाला पार्ट, यहाँ पर आउटर डायमीटर 64 है और इंटरनल डायमीटर 36। क्लिक ऑन द सर्कल, आउटर डायमीटर इज 64, एंटर, इंटरनल डायमीटर इज 34, एंटर। Click on the finish sketch. Click on the extrude. Select the extrude area. अब ये हाइट देखेंगे कितना, 36। यहाँ पे डायमेंशन पे 36 डालेंगे, डिस्टेंस 36। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। और अभी नेक्स्ट वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सर्कल का 100 mm और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 42 mm एंड इंटरनल डायमीटर 24 mm। सो लेट्स ड्रॉ। यहाँ पर आप ओरिजिन में जाके 2D स्केच के लिए प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द XY प्लेन। यहाँ पर पहले सेंटर का डिस्टेंस मार्क करके लेंगे 100 mm, एंटर। क्लिक ऑन द सर्कल, outer diameter is 42, yes 42, enter। The internal diameter is 24। और ये वाला सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इसके बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पर पहले क्लिक एक्स के, यहाँ पर लाइन सिलेक्ट करेंगे। ओके, ऐसे क्लिक ऑन द फिनिश स्केच, क्लिक ऑन द एक्सट्रूड, सिलेक्ट एक्सट्रूजन एरिया, 12 mm का एक्सट्रूजन है, 12 mm। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन द 2D sketch, select XY plane, click on the circle, 42 और internal diameter 24। Click on the finish sketch, extrude, height of the object is 24, okay। Now we are going to create this rib section. So for that, click on the 2D sketch, select XZ plane, click on the line, finish sketch, click on the rib option, select the option parallel to sketch plane. The thickness of the rib is 12 mm. Select the profile and click on OK. Now here is the keyway section. Left line dimensions are 12 by 6, so just 6. Click on this extrude option, select here cut option, select the geometry,
You can simply select this cut by dragging this arrow. Click on the OK. You can see our 3D model is ready. इसको कलर करने के लिए यहाँ पर अपीयरेंस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे पार्ट को, और यहाँ पे डिफरेंट कलर हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा 3D मॉडल रेडी है।